Namaskar, good evening and greetings to all our viewers. I am Abhay Kumar and together with my dear colleague and fellow commentator Dr. Alok Srivastav, I welcome you to this launch event being telecast live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, also known as SHAR, the spaceport of India. We are here to bring to you the live coverage of PSLV-C29 TeLEOS-1 mission carrying 6 satellites from Singapore. The orbit for this mission is 550 kilometers circular with an orbital inclination of 15 degrees from the equatorial plane. Today's flight is the 32nd flight of PSLV and 11th flight of PSLV core alone configuration. It has been a bright sunny here and it's turning into a beautiful evening. Weather conditions are very favorable and the launch will take place at 6 p.m. Indian Standard Time from the first launch pad here. As I have mentioned, today we are carrying 6 satellites with a total weight of 622 kilograms. The main spacecraft is TeLEOS-1 and along with it we have 2 microsatellites, the TeLEOS-1 and VELOX-C1. We also have on board 3 nanosatellites called VELOX-1, Galaxia and Athenosat-1. नमस्ते, शुभ संध्या। मैं आलोक श्रीवास्तव अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक साथी श्री अभय कुमार जी के साथ आप सभी देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम इस समय इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के अभियान नियंत्रण केंद्र में मौजूद हैं, जहां से आपको PSLV-C29 से सिंगापुर द्वारा निर्मित उपग्रहों के प्रक्षेपण का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करेंगे। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की ये 32वीं उड़ान होगी, जिसमें हम दूसरी बार सिंगापुर के लिए उपग्रहों का प्रक्षेपण करने जा रहे हैं। शायद आपको याद हो कि इससे पहले हमने 2011 में सिंगापुर के 106 किलोग्राम भारी उपग्रह XSAT का प्रक्षेपण किया था। आज लगभग 4 वर्ष बाद पुनः एक बार हम उस इतिहास को दोहराते हुए PSLV की पूर्ण वाणिज्यिक उड़ान भरने जा रहे हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो पूरी तरह से प्रक्षेपण के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। यूं तो आसमान पूरी तरह से साफ है और सूरज तमाम दिन की यात्रा कर हमारे इस प्रक्षेपण अभियान को सलामी देकर अस्त होने को है। शाम के धुंधलके में कुछ छिटपुट बादलों के टुकड़े जैसे आसमान में यहां वहां बैठकर प्रक्षेपण के गवाह बनने को तत्पर हों। आज PSLV-C29 द्वारा कुल 622 किलोग्राम भारी 6 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। सिंगापुर द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह TeLEOS-1 400 किलोग्राम भारी है, जिसे भूप्रेक्षण संबंधित जानकारियां जैसे समुद्री निगरानी, सीमा सुरक्षा, आपदा निगरानी, शहरी नियोजन एवं होमलैंड सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसी के साथ प्रक्षेपित होने वाले 2 माइक्रो सैटेलाइट नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU द्वारा निर्मित 123 किलोग्राम भारी VELOX-C1 और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NSU द्वारा निर्मित 78 किलोग्राम भारी TeLEOS-1 और 3 नैनो सैटेलाइट NTU का ही 13 किलोग्राम भारी VELOX-2, लगभग 6 किलोग्राम भारी एथेनोसैट और NUS का 3.4 किलोग्राम भारी गैलेसिया। श्रीहरिकोटा में 2 प्रक्षेपण स्थल हैं। लगभग 44.4 मीटर ऊंचे PSLV को प्रथम प्रक्षेपण स्थल से छोड़ा जाएगा। इस उड़ान में भू अवलोकन उपग्रह TeLEOS को 550 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में छोड़ा जाएगा, जो विषुवत रेखा से 15 डिग्री पर झुकी हुई होगी। PSLV-C29 has a liftoff weight of about 228 tons and is 44 meters tall. The stacking of PSLV-C29 on our first launch pad commenced on 26th October 2015 and the final 59 hours of countdown for the launch commenced day before yesterday at 7 a.m. Indian Standard Time. We are about 25 minutes to the launch. All preparations are as per plan. The vehicle is being very carefully monitored for its health parameters.
We will now show to you a short video on the integration of PSLV-C29. जी हाँ, ये छोटी सी वीडियो क्लिपिंग जो आपको समर्पित है, इसमें विभिन्न चरणों के समाकलन को दर्शाया गया है। पीएसएलवी एक ऐसा यान है जो 4 चरणों से मिलकर बना हुआ है। इसी से संबंधित एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज के प्रक्षेपण यान पीएसएलवी के 3 संस्करण हैं। कोर संस्करण, 6 अतिरिक्त स्ट्रैप ऑन वाला स्टैंडर्ड संस्करण एवं एक्सेल संस्करण में ये स्ट्रैप ऑन स्टैंडर्ड संस्करण की तुलना में ज्यादा लंबे होते हैं। As the video comes on, let me explain to you slightly about the PSLV vehicle. We have PSLV core-alone configuration with 4 stages, and the first stage of PSLV is called PS1 and employs our S139 solid booster. The second stage of PSLV is called PS2 and employs our Vikas engine with 42 tons of liquid propellant loading on the stage. It develops a thrust of 800 kilonewtons, works for 150 seconds with a specific impulse of 293.3 seconds. As you now see, the PSLV on its launch pad is sitting majestically, and you can see the scientists monitoring the monitors very clearly and with intent. All the health parameters are being checked, and we are all waiting for the launch to happen. जी हाँ, इसरो द्वारा प्रक्षेपित हर अभियान में कोई न कोई खास विशेषता होती है, किसी न किसी नई तकनीक के विकास की कहानी होती है। आज भी कुछ ऐसा ही है। आज PSLV-C29 में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम परीक्षित होने जा रहा है, जिसका उपयोग आने वाले PSLV और GSLV अभियानों में किसी न किसी रूप में किया जाएगा। दरअसल चतुर्थ चरण के पहली बार प्रज्वलन के बंद होने और सारे 6 उपग्रहों के पृथक्करण के पश्चात लगभग 50 मिनट अर्थात 3000 सेकंड के बाद एक बार पुनः प्रज्वलित करने का प्रयास किया जाएगा, और इसे लगभग 3 मिनट के प्रज्वलन के बाद उसके निष्पादन को परखा जाएगा। इस सारे घटनाक्रम के संकेतों को ब्राजील के अल्कंटारा भूकेंद्र पर प्राप्त किया जाएगा और विस्तृत विश्लेषण के बाद किसी न किसी रूप में आने वाले अभियानों में उपयोग में लाया जा सकेगा। इस समय हम प्रक्षेपण से लगभग 21 मिनट की दूरी पर हैं, और जैसा हम आपको बता रहे थे कि जो समायोजन होता है जो चरणों का, वो अलग अलग स्टेज पे किया जाता है। इस समय हम जो उपयोग में ला रहे हैं यान, वो कोर संस्करण है PSLV-C29, अर्थात इसमें कोई भी अतिरिक्त स्ट्रैप ऑन मोटर नहीं लगाया गया है। किंतु जब कभी किसी भारी उपग्रह का प्रक्षेपण करना होता है, जैसा कई बार आपने देखा होगा IRNSS सीरीज को, तो हम इस तरह के यान का प्रयोग करते हैं जो स्टैंडर्ड संस्करण हो या एक्सेल संस्करण हो। PSLV 4 चरणों वाला यान है। प्रथम चरण में 138.2 टन ठोस ईंधन भरा होता है। द्वितीय चरण में 41.35 टन तरल ईंधन US-25 एवं तृतीय चरण में 7.6 टन ठोस ईंधन HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन भरा रहता है, और अंतिम चरण चतुर्थ चरण में 0.82 टन तरल ईंधन मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और MON3 भरे हुए होते हैं। इस समय लगभग जो प्रमोशन यान है उसका भार 227.6 टन और उसकी कुल ऊंचाई 44.4 मीटर है। दरअसल अगर हम इसे विस्तृत रूप में जानकारी चाहें तो पहला चरण लगभग 20 मीटर लंबा, दूसरा करीब 12.8 मीटर लंबा, तीसरा करीब 3.6 मीटर लंबा और अंतिम चरण 3 मीटर लंबा, और इस तरह से कुल ऊंचाई यान की 44 मीटर हो जाती है। उसी तरह से जो व्यास है चरणों का, जो सबसे प्रथम चरण है नीचे वो 2.8 मीटर, द्वितीय चरण भी 2.8, लेकिन तीसरा चरण थोड़ा
कम व्यास वाला 2 मीटर और चतुर्थ 1.34 मीटर वाला। Continuing with the vehicle description, the third stage of PSLV is called PS3 and is again a is moved to a safe distance so that the vehicle stands on the pedestal and the launch can proceed. बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की प्रतीक्षा। हम प्रक्षेपण से केवल 16 मिनट 10 सेकंड की दूरी पर अभियान निदेशक से प्रक्षेपण की अनुमति की प्रतीक्षा। Mark man 16 minutes and counting. The authorization of the launch is given after review by Mission Readiness and Launch Authorization Board. This authorization is given after checking the readiness of the vehicle, satellites, and ground stations. Range is ready. On the first day of the pad, PSLV-C29 of the countdown, we had the propellant filled of the second stage. Now, as my fellow commentator said, we are waiting for an important announcement towards the launch authorization, which will come at T minus 15 minutes. Here, the mission director will authorize the launch to the vehicle director, who can proceed further. We will just wait for a couple of seconds to see and hear our vehicle director authorizing the launch. All stations stand by for the time mark. Mark man is 15 minutes and counting. You can see the launch is authorized by the mission director. PSLV-C29 launch vehicle and now the customer satellites are in good health. The range systems and the TTC systems are ready.
Based on this, mission director hereby At T minus authorizes 14 to minutes, start the vehicle launch director operation will sequence for the authorize launch of the initiation of PSLV-C29 automatic launch TeLEOS-1 mission sequence, at the 18 hours ALS. IST. All stations note, mission director's authorization for going ahead with the launch operation sequence for PSLV-C29 TeLEOS mission is given. जी हाँ, अभी आपने हमारी आवाज़ के साए में वो घोषणा सुनी जो अभियान निदेशक ने दी। जैसा अभय कुमार जी बता रहे थे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा होती है और यहीं से सारे सिस्टम्स के परीक्षण के अवलोकन के पश्चात ही इसकी अनुमति दी जाती है। T-15 पर अभियान निदेशक ने प्रक्षेपण की अनुमति दे दी है और इस तरह से अब आगे की गतिविधियां अबाध रूप से जारी रहेंगी। पूर्व नियोजित रूप से इनका क्रम चलता रहेगा। अनुमति की ये घोषणा प्रक्षेपण यान उपग्रह एवं भू केंद्र की विभिन्न प्रणालियों के पूर्ण अवलोकन के पश्चात ही की जाती है, जो अनवरत रूप से उड़ान के विभिन्न आंकड़ों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। इससे ठीक 1 मिनट के बाद अर्थात T-14 मिनट पर यान निदेशक स्वचालित प्रक्षेपण अनुक्रम के आरंभ की उद्घोषणा करेंगे। कुछ ही क्षणों पहले हमने इसे सुना है और हम इसकी प्रतीक्षा में हैं। After the authorization of launch, automated launch sequence initiation by vehicle director, now the vehicle is under automated launch sequence, and from now onwards, the checkout of all the vehicle and satellite related activities are taken care by the onboard computer system residing on the vehicle. Coming to the weather here, it has been very clear and favorable. The important factor when it comes to weather is the one related to the wind speeds on the ground and in flight. The ground wind speed has been very benign, and the upper altitude winds too are also favorable, and the winds are of very small magnitude. During atmospheric flight of PSLV-C29, it is essential to fly a near zero aerodynamic angle of attack trajectory so that the aero loads on the vehicles are minimal. To do this, accurate measurement of winds are essential. Today, balloons were released at various time intervals to take measurements of the upper atmosphere winds. The winds measured are then synthesized to form a single wind profile from the ground to 60 kilometers of altitude, and this profile is then made available at 1 hour 20 minutes before liftoff. This wind profile is then used to generate the steering program for PSLV-C29 during its atmospheric flight. This steering program ensures lesser aerodynamic loads on the vehicle. The steering program gets loaded into the system on onboard flight systems at launch minus 45 minutes. धीरे धीरे सूरज अस्त होता हुआ, लेकिन प्रक्षेपण यान के चारों तरफ की रोशनी उसके गर्व को दर्शाती हुई अभियान नियंत्रण केंद्र में प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र से मिलने वाले सभी आंकड़ों का गहन अध्ययन होता हुआ, विभिन्न प्राचलों का बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण होता हुआ। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर PSLV-C29 के कोड संस्करण को। Mark minus 11 minutes. इस समय हम लगभग 11 मिनट की दूरी पर 2 दिनों पूर्व उल्टी गिनती के प्रारंभ से लेकर अब तक जाने कितनी ही ऐसी गतिविधियां, कितने ऐसे क्रियाकलाप अति सावधानी पूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं, जिनकी सफलता ने हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों में नया उत्साह भरा और यान के प्रमोशन को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। इस चरण तक हम लगभग, जैसा मैं देख पा रहा हूं, 600 गतिविधियों को अंजाम दिया जा चुका है और शेष क्रियाकलाप कुछ ही क्षणों में एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूरे कर लिए जाएंगे। प्रक्षेपण के पूर्व लगभग 750 ऐसे अभिक्रम होते हैं, जिन ऐसी गतिविधियां होती हैं जो पूरी की जाती हैं। आज प्रक्षेपण स्थल पर आसमान बिल्कुल साफ खुला हुआ। हमने प्रक्षेपण मुहिम के साथ ही लगातार मौसम और हवा की गति पर नजर रखी है और आज जमीन पर हवा की गति भी खासी सामान्य, लगभग 5 से 6 मीटर प्रति घंटा। वैसे लगभग 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी तरह के
नुकसान का कोई खतरा नहीं होता यान को। वायुमंडल में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर आज सुबह मापी गई वायुगति द्वारा कार्यक्रम को आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़ती है तो अभिकल्पित किया जा सकता है पुनः, ताकि आरोहण के दौरान वायुगतिकीय घर्षण भार को अल्पतम किया जा सके। आज प्रातः किए गए विस्तृत अनुकरणों से प्रतीत होता है कि सभी मान अपेक्षाएं नियत सीमाओं के अंदर हैं। सुबह के अवलोकनों के आधार पर वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र स्तर भी स्वीकार्य है। प्रक्षेपण के लिए ये विद्युत क्षेत्र स्तर 1000 वोल्ट प्रति मीटर से कम होना चाहिए ताकि तड़ित की किसी भी संभावना को नकारा जा सके। इस समय हम लगभग 9 मिनट की दूरी पर एक और स्वचालित प्रक्षेपण अनुक्रम सैकड़ों यान प्राचलों का निरीक्षण कर रहा है, तो दूसरी ओर अभियान तथा प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्रों में अनेक विशेषज्ञ उड़ान संबंधित विभिन्न अवलोकित आंकड़ों का गहन अध्ययन करने में व्यस्त हैं। आप अपने स्क्रीन पर हमारे कस्टमर्स को देख पा रहे हैं। सिंगापुर के वो विशेषज्ञ, ये विशेषज्ञ इसरो से संबंधित सारे आंकड़ों को अध्ययन करते हुए आप देख पा रहे होंगे। We are about 8 minutes to launch, and you can see all our experts monitoring the launch very carefully. Phase 1 charging of PS2 accumulators. We have so far provided launch services onboard PSLV for 51 customer satellites from 20 countries. We have already launched XSAT spacecraft from Singapore in 2011 onboard PSLV-C29. Today we are launching another 6 satellites from Singapore, and I would share with you a small description of these satellites. TeLEOS-1 is the first Singapore commercial Earth observation satellite designed and developed by ST Electronics. This electro-optical satellite is to be launched into 550 km circular orbit with 15 degrees inclination and will be used for remote sensing applications. It will have an orbital period of 96 minutes. The imaging resolution is 1 meter panchromatic at nadir with a swath width of 12 kilometers. It uses S-band telemetry and X-band downlink for communication. TeLEOS-1 has a mission life of 5 years and weighs 400 kilograms at liftoff. Next spacecraft, the Kentridge-1, is from National University of Singapore. It is a 78 kg microsatellite with 2 primary payloads, a medium resolution very near infrared hyperspectral camera and a shortwave infrared hyperspectral camera. Its secondary payload is a real-time high-resolution video camera. The modes of communication are UHF telemetry link and X-band data downlink. Velox C1 is from Nanyang Technological University, Singapore. It is a 123 kg microsatellite for research in tropical environment monitoring using radio occultation techniques. The satellite will be operated from the ground station located in Nanyang Technological University. Then we have Velox 2 satellite, also from Nanyang Technological University. It is a 13 kg 6U CubeSat technology demonstrator with 3 payloads, namely the communication payload, experimental payload, and the fault-tolerant payload. It will also be operated from the ground station at Nanyang Technological University. Mark 6 minutes and counting. The next satellite, Galaxia spacecraft, is from National University of Singapore. It is a 3.4 kg 2U CubeSat carrying 2 payloads. One measures the total electron count in the ionosphere over Singapore, and the other is a small photon entangling quantum system to acquire quantum correlation data in space. The modes of communication are UHF uplink and VHF downlink. Finally, we have AthenoSat-1, again from Nanyang Technological University, Singapore. It has been designed, developed, and built by Microspace Rapid Private Limited in its Singapore laboratory. AthenoSat-1 is a technology demonstrator nanosatellite for Earth remote sensing. It is based on a 3U CubeSat form factor and is launched as piggyback on a slot arranged by Nanyang Technological University. जी हाँ, तो जैसा अभी अभय कुमार जी बता रहे थे कि हमारे 6 सैटेलाइट्स जो सिंगापुर से यहाँ पे लाए गए, उन्हें संयोजित किया गया और उन्हें प्रक्षेपित किया जाना है आज शाम को 6 बजे। हम इस समय लगभग 4 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर हैं। दरअसल ये सारा अरेंजमेंट
एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो इसरो की ही एक वाणिज्यिक इकाई है, Flight coefficients जो loading राष्ट्रीय completed. व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपण की किसी भी संभावना को तलाश कर उसे अंजाम तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसे 1992 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया था। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को 2008 में मिनी रत्न नामक पुरस्कार या उपाधि से नवाजा गया था। प्रक्षेपण सेवाओं के अलावा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन संचार उपग्रहों में प्रयुक्त ट्रांसपॉन्डर एवं सुदूर संवेदन संबंधी आंकड़ों की मार्केटिंग इत्यादि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए विदेश की कई कंपनियों ने गुजरे सालों में इसरो के साथ कई करार किए हैं, जिनकी परिणति आज आपके सामने इस अभियान के रूप में देख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से भारत के अन्य देशों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और मानव जाति के कल्याण के लिए ये बड़ा अहम होगा। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ने वर्ष 2015 और 17 के दौरान 6 अन्य राष्ट्रों अल्जीरिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर और अमेरिका के लिए कुल 28 उपग्रहों के प्रक्षेपण का करार करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। दोस्तों, श्रीहरिकोटा जहां से हम लगातार प्रक्षेपण करते आ रहे हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रक्षेपण स्थल को विश्व में अमेरिका स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के बाद द्वितीय सर्वश्रेष्ठ स्पेसपोर्ट का दर्जा दिलाती है। इस समय हम लगभग 3 मिनट की दूरी पर, वैसे विश्व में ज्यादातर प्रक्षेपण पूर्व दिशा में ही किए जाते हैं ताकि पृथ्वी के घूर्णन की ऊर्जा से लगभग 0.4 किलोमीटर का वेग लाभ उठाया जा सके, या यूं कहें कि हम ईंधन की खपत को कम करना चाहते हैं। दूसरी चीज कि प्रक्षेपण स्थल को समुद्र के किनारे ही बनाया जाता है ताकि किसी भी असफलता की स्थिति में जान माल के नुकसान से बचा जा सके। और तीसरी बात, जहां तक हो सके प्रक्षेपण स्थल विषुवत रेखा के नजदीक हो, तो भूस्थैतिक कक्षा में प्रक्षेपण में जहां कक्षीय झुकाव लगभग 0 डिग्री होता है, बहुत मदद मिलती है। हमें प्रमोचन के पश्चात उपग्रह को कक्षा स्थानांतरण में अलग से ईंधन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत के पास पूर्व और पश्चिम दोनों संभावनाएं उपलब्ध थी, दोनों और विशाल समुद्र तट मौजूद हैं। अभी तक हमने जितने तथ्यों का जिक्र किया आपसे, श्रीहरिकोटा उन सारी चुनौतियों पर खरा उतरता है। किसी भी उड़ती हुई चीज से क्या, कब और कहां गिर पड़े कोई नहीं जानता, इसलिए समुद्र तट से अनुमानित दूरी लगभग 6500 किलोमीटर की होना उचित माना गया है, और यह शर्त भी श्रीहरिकोटा पूरी करता है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास ऐसा संसाधन मौजूद हो। हम लगभग 1 मिनट 45 सेकंड की दूरी पर हैं इस समय। We are very close to launch, and it is time to tell you another important feature of this launch. In today's mission of PSLV-C29, we are also going to demonstrate the in-orbit restart of our fourth stage, the PS4. This will be done for a steady-state PS4 burn duration of 3 seconds. PS4 will restart about 50 minutes, that is 3000 seconds after the first PS4 shut off. The restart will be tracked, that is telemetry-wise visible from Alcantara ground station in Brazil. We have successfully demonstrated the PS4 restart on ground in our high-altitude test facility. The in-orbit restart capability of PS4 will help place satellites in quite different orbits in the same launch. It also gives the mission planners more flexibility in the launch vehicle mission design. Minus 45 seconds. For PSLV-C29 related to PS4 restart, all preparations are completed and we expect a smooth restart demonstration. Also, all the satellites just injected are ensured to be at least 4 kilometers away from PS4 at any time during its restart demonstration. Minus 25 seconds. हम बहुत नजदीक प्रक्षेपण के केवल 20 सेकंड की दूरी पर, इसलिए अब मेरी खामोशी और मेरी आवाज के साए में मिशन कंट्रोल सेंटर से उद्घोषणा की प्रतीक्षा। We go quiet and let you have a feel of the launch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. PS1 ignited. 3, vehicle lift off normal. सफल प्रज्वलन। 7, 8, 9. आकाश की ओर बढ़ता PSLV-C29
गर्व के साथ plus 15 seconds, एक धुएं की लकीर छोड़ता अपने plus 20 पीछे seconds, पथ और गर्जन दोनों एक साथ plus प्रकाशित 25 seconds, अनुमानित पथ Plus 30 बिल्कुल seconds. अवलोकित पथ को फॉलो करता हुआ, उसका अनुसरण करता हुआ 30 सेकंड का समय व्यतीत, बिल्कुल सफल प्रज्वलन। plus 40 seconds, You can see a wonderful performance PSLV normal. lighting up the evening sky here, and right now PSLV is Plus 50 successfully seconds. negotiating the dense atmosphere of Earth with its thrusting power. plus 55 As you seconds, can see, the vehicle is flying 1 exactly minute. planned trajectory with no deviations at all. The flight till now is nominal. We are about 65 seconds into the flight, and we are transgressing the atmosphere in a perfectly planned manner. ठोस कोर चरण जमीन पर ही प्रज्वलित हो जाती है। प्रथम First चरण is यान को performance लगभग normal. 55.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1.65 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्रदान करते हुए 1 मिनट 53 सेकंड के बाद पृथक हो जाएगा, और हम बहुत ही नजदीक इस पृथककरण के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण पृथककरण का। कितना स्पष्ट स्वरूप आप देख पा रहे हैं हमारे प्रक्षेपण यान का। PS1 has separated as beautifully, and PS1 PS2 stays is ignited. separated. PS2 engine started. जी हाँ, गति चरण प्रज्वलन हो उसका प्रज्वलन हो चला है, और इस समय वो अपने पथ पर अग्रसर होता हुआ। We are at an altitude of 75 kilometers and already covered 50 kilometers of range. The vehicle velocity is 1.5 kilometers per second, and we are slowly approaching the next Second event, stage performance that is the normal. separation of the heat shield. As we climb in altitude and reach about 115 kilometers, the heat shield will no longer be required, as we have crossed the atmosphere. And then the heat shield can be ejected, and this ejection is a process which has been very carefully designed, and we are now very closing in to the heat shield separation. जी हाँ, ऊष्मीय सुरक्षा कवच Heat shield पृथक्करण separated. बहुत सफल पृथक्करण हुआ ऊष्मीय सुरक्षा कवच का, plus 3 minutes, और उससे भी आगे बढ़ता हुआ द्वितीय चरण प्रज्वलन के दौरान इसे लगभग 146.7 सेकंड का समय व्यतीत Second करना stage है, performance normal. लगभग 2.4 मिनट का अभी तक सामान्य निष्पादन। इस समय हम लगभग 204.8 सेकंड समय व्यतीत करते हुए 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी वेग प्राप्त कर चुके हैं, और हम 178 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचे हैं। PS2, our second stage, which is now performing, is a liquid engine having a steady state thrust of 800 kilonewtons. It has a total burn duration of 150 seconds, and it has a specific impulse of 293 seconds. It will nominally shut itself off Plus when 4 the minutes. guidance will command it at the required target conditions being met. We are very close to it, and we expect the shut-off to happen in about 10 seconds time. The performance of flight till now has been near nominal, as you could see from the plots. PS2 stays separated. जी हाँ, द्वितीय PS3 चरण stays अलग हो चुका ignited. है, और तृतीय चरण का जो प्रज्वलन है वो भी उसके भी शुरू होने की घोषणा हो चुकी है। सामान्य निष्पादन लगभग 4.5 मिनट का समय गुजर चुका है। कुल चरण जब ज्वलन होगा उसका लगभग 17 मिनट हम इस अभियान में बिताएंगे, जब तक 6 उपग्रहों को प्रक्षेपित और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस समय हम लगभग 4.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं, और लगभग Plus 5 minutes. 470 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से, ऊंचाई 228 किलोमीटर की। Third stage performance normal. PS3, our third stage, is a very efficient motor,
and has a composite motor case. This composite motor case helps us to have payload improvements as this is a upper stage of the vehicle. PS3, which is now performing, develops a peak thrust of 240 kilonewtons and burns for approximately 80 to 90 seconds. We expect a burnout of PS4 at 384 seconds, which is another 45 seconds from now. This solid motor is developed into a high performance motor with a specific impulse of 295 seconds, and the motor is Plus 6 minutes. a workhorse for us, giving its performance in terms of improved structural factor and efficiency. आकाश इतना खुला हुआ कि अभी तक एक बिंदु के रूप में हम प्रक्षेपण यान को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला चरण सॉलिड मोटर का, तीसरा चरण भी सॉलिड मोटर, और द्वितीय और चतुर्थ चरण जो हैं वो द्रव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तृतीय चरण के ज्वलन या बर्नआउट के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व एक कोस्टिंग पीरियड कहलाता है जो लगभग 522 सेकंड का है। अभी तृतीय चरण के सामान्य निष्पादन की घोषणा की गई है। अभी तक जैसा उसका निष्पादन रहा है बिल्कुल सामान्य। अगर हम पहले चरण के ऊपर ध्यान दें तो वो लगभग यान को 55.956 किलोमीटर ऊंचाई ले जाता है। दूसरा चरण उसे लगभग 199.676 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तीसरा चरण लगभग 380.08 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देगा और अंतिम चरण उसे अंतिम ऊंचाई इस अभियान में लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देगा। अगर हम वेग मान की बात करें तो पहला चरण लगभग 1.6478, दूसरा 4.3262, तीसरा चरण 7.521 और अंतिम चरण 7.582 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी पहुंचा देगा। We are now in a deliberate coast between third stage burnout and fourth stage ignition. This is a non-thrusting phase of the rocket Plus 8 and minutes. helps optimize the rocket trajectory and performance. In PSLV-C29, the coast duration is about 530 seconds, out of which 200 seconds is combined coast of before PS3 separation. This combined coast is deliberately given because the solid motor will be still having a leftover burning and a small thrust will be generated for some time. We wait for this thrust to die so that when we separate PS4 Performance and during again combined coast coasting without is normal. igniting it, PS3 will have no opportunity to catch up with PS4 because its thrusts will be zero and there will be adequate separation velocity provided between PS3 and PS4. We are now very close to the separation of PS3, which we expect to happen at around 585 seconds. We have Plus about 9 a minute, minutes. and I would like to brief you about an activity which we do regularly for our mission. One aspect of launch clearance procedure is our collision avoidance studies with space objects in orbits. Here, an analysis is done to assess the collision risk between already existing space objects and the upper stage of launch vehicle and also the 6 satellites once they are in orbit. Potential collisions, if any detected, are avoided by adjusting the time of launch within the specified launch window. This collision avoidance analysis is carried out as a standard practice for all launches from Sriharikota. There is no such concern for this mission. जी हाँ, बहुत ही नजदीक तृतीय चरण के पृथक्करण का, और हाँ इसके पृथक्करण की और अब हम चतुर्थ चरण के PS3 separated. इग्निशन की प्रतीक्षा में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये चरण, Plus और 10 इस minutes. चरण में जब पृथक्करण होता है तो वो और भी असंभावी हो जाता है उसका विश्लेषण, क्योंकि किसी भी प्रमोशन के होने या न होने से जुड़ी होती है
अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण। इस विश्लेषण का आधार है संघट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से, वो डेब्रिस भी हो सकती है, या यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे किसी भी संभावित टकराहट से बचने के लिए प्रमोचन समय को उपलब्ध प्रमोचन विंडो में उचित रूप से समायोजित कर लिया जाता है। शार से किए गए पिछले कई प्रक्षेपणों में अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण करना एक प्रमाणित तरीका बन चुका है। आपको याद होगा कि ऐसे ही एक C19 RI सेट में इसी अध्ययन के आधार पर प्रमोचन में 1 मिनट की देरी की गई थी, पर इस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने प्रक्षेपण बिल्कुल अपेक्षित समय पर किया। हम लगभग 11 मिनट का समय व्यतीत कर चुके हैं इस समय, और लगभग जो वेगमान है वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड का, और ऊंचाई 2886 किलोमीटर की, और जो परास है, और ऊंचाई 430 किलोमीटर की। हम श्रीहरिकोटा से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर। We have another 210 seconds before PS4 ignition happens, and I would like to share with you the velocity requirements and how we are giving the velocity to the satellites. The total velocity required for orbit for placing the satellites in orbit is 7.6 kilometers per second. The first stage provides 1.65 kilometers per second, which is about 22% of the velocity requirement. Plus 12 minutes. The second stage provides additional velocity and takes it from 1.65 kilometers per second to 2.25 kilometers per second. By the time, second stage takes it to 4.3 kilometers per second. I regret the error. From 1.65, we go to 4.3 seconds per second, and 4.3 kilometers per second, and 57% of the velocity is already provided. The third stage takes it to near orbital velocities and provides an aggregate of 7.5 kilometers per second. That is, at the end of third stage, the total velocity of the vehicle is 7.5 kilometers per second. Then we get into this long coast and wait for the right opportunity of ignition to get into orbit. And the PS4 will be providing only about 200 meters per second, but it will do a most Plus important 13 job minutes. of giving a precise injection into orbit. After PS4 has Performance during injected coasting is the normal. spacecraft into orbit, we follow a standard practice of passivating the PS4. This is to keep PS4 safe in orbit and intact in one piece, and not to create unnecessary debris in orbit. Once PS4 is commanded to be shut off on reaching the intended orbit, there will be leftover propellants in the tank. These need to be vented out so that PS4 is safely intact and in one piece in orbit. The venting is carefully done by opening appropriate T-shaped vent nozzles. During this, the PS4 is also held at a desired orientation, as the just inducted spacecrafts are nearby and they have to be kept safely away. The passivation process thus vents out the remaining propellants while maintaining safe distances from injected Plus 14 satellites, minutes. and also lets us know the exact orbital position of PS4 for further tracking. जी हाँ, जैसा कि अभय कुमार जी बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अभीष्ट वेगमान की प्राप्ति हो सके। अभीष्ट वेगमान जो प्रक्षेपण के लिए बहुत आवश्यक था, जहाँ पे हमें उपग्रहों को उनकी नियत कक्षा में इंजेक्ट करना पड़ता है, वो इस समय 7.585 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इस समय चतुर्थ चरण प्रज्वलन नहीं किया गया है। हम कोस्टिंग से गुजर रहे हैं, निष्पादन बिल्कुल सामान्य तृतीय चरण का, और चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में कुछ ही क्षण शेष। सभी निगाहें उस पर। जो वेगमान है वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड का हो चुका है। ऊंचाई लगभग 525 किलोमीटर पहुंच गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण। Plus 15 minutes. जब चतुर्थ चरण का प्रज्वलन हो PS4 engine और started. चतुर्थ चरण 903.3 सेकंड के बाद इग्नाइट हो गया है।
इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हमने अभी तक जितने भी PSLV के प्रमोशन देखे हैं सभी में अवलोकन पथ, बाकायदा अनुमानित पथ दोनों एक दूसरे को अनुसरित करते हैं। बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित और संघट्ट मुक्त हो। ये पृथक्करण घटनाएं अभियान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए इनकी अभिकल्पना पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित और सख्त बनाया जाता है। PSLV-C29 में ऐसी कुल 6 पृथक्करण घटनाएं हैं। अभी इस कक्षा में पहुंचने के बाद TeLEOS-1 एवं शेष 5 उपग्रह कैंट्रिज-1, वेलॉक्स-C1, वेलॉक्स-2, गलेशिया एंड एथेनोसैट यान के अंतिम चतुर्थ चरण से अलग हो जाएंगे। ये पृथक्करण प्रमोशन के लगभग 1091 सेकंड के पश्चात 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। हम लगभग 973 सेकंड के समय व्यतीत करते हुए हम लगभग 6.96 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त कर चुके हैं। इस समय ऊंचाई 546.3 हमारे 550 की ऊंचाई से बिल्कुल नजदीक। We are steadily gaining velocity provided by our precise and accurate functioning PS4. PS4 is a twin engine pressure fed configuration utilizing liquid fuels. The PS4 is a highly efficient engine with a specific impulse of 305 seconds. 17 minutes. In this mission, we have loaded PS4 only half its capacity, that is 800 kilograms, as per the requirements of this mission. Now we are very close to our orbital velocity, and we are expecting the PS4 to cut off itself in a PS4 very short engine shut off. duration. Ejection conditions are achieved. जी हाँ, चतुर्थ चरण बंद किया जा चुका है 1042.1 सेकंड में, और 1091 सेकंड के आसपास हम TeLEOS-1 का पृथक्करण करेंगे। और अभी इस वेलोसिटी 7.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। पृथक्करण की प्रतीक्षा कुछ ही क्षणों में। We are waiting for the injection of TeLEOS Plus 18 into minutes. orbit, which will happen anytime now. सारे विदेशी ग्राहक, सिंगापुरियंस विशेषज्ञ TeLEOS-1 is placed in the orbit. आंकड़ों की नजर रखते हुए बड़े खुश हुए। वो उनके चेहरे में मुस्कान देख पा रहा हूँ, एक दूसरे को बधाई देखते हुए, जब उन्होंने TeLEOS-1 सेपरेशन पृथक्करण की घोषणा की प्रतीक्षा की और उसे पा लिया। Another 30 seconds later, we are going to inject Kentridge-1 and Velox-C1 near simultaneously. And right now, the PS4 stage is being reoriented for a safe Kentridge direction and of ejection of Velox-C1 these are placed satellites. in the orbit. जी हाँ, Velox-C1 भी पृथक हो चुका है। सभी चेहरे मुस्कुराते हुए एक दूसरे को बधाई देते हुए, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के वैज्ञानिक के चेहरों पे भी मैं मुस्कान देख पा रहा हूँ। अभय जी, वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है ये Plus क्षण। 19 Yeah, minutes. बिल्कुल। और ये it is excellent to see the vehicle performing for our customers in a wonderful manner. And now we are expecting the ejection of Velox-2 Velox-2 is spacecraft. separated and placed in the orbit. जी हाँ, Velox-2 को भी अलग कर दिया गया है। तालियों के साथ उसके भी पृथक्करण का स्वागत हुआ। यान ने अपना निष्पादन सामान्य रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। We are waiting for another 40 seconds before we eject the next spacecraft, Galaxia. Again, we are waiting to reorient PS4 in a favorable direction so that the spacecraft is injected and kept safely away from the remaining spacecrafts. अंतिम उपग्रह गलेशिया, जिसे पृथक्करण करना होगा, बहुत ही आवश्यक। Next one is one more, Athenosat. एथेनोसैट, जी हाँ, जी हाँ, अभी गलेसिया होगा? Plus 20 Galaxia. minutes. जी हाँ, उसका भी पृथक्करण Galaxia हो is गया separated and सफलतापूर्वक। placed in the orbit.
और इसके बाद अब अंतिम उपग्रह एथनोसैट जो नैनो सैटेलाइट है वो भी यान से पृथक कर दिया जाएगा. We are waiting for ethnosat separation, which will happen in another 50 seconds. As I have told you, we keep on orienting PS4 in a particular way and then eject the spacecrafts. This helps us to keep these 6 spacecrafts away from each other. As you can see, these spacecrafts have the nearly same orbital velocities, but because of the orientation changes and the small separation velocities which we give, we are able to keep these spacecrafts away from each other. We do a long-term propagation analysis before we finalize the sequence of ejection. Today you have seen the sequence of ejection in a particular manner, and it is a result of a very careful Plus analysis. 21 minutes. Athrosat is separated and PSLV-C29 has injected all the 6 Singapore satellites into the expected orbit. पूरा Congratulations to one अभियान and all. सफल. 6 Separation उपग्रह of all the 6 सिंगापुर के customer satellites has been confirmed, and पृथक mission director कर hereby declare that PSLV-C29 TeLEOS-1 mission is accomplished. Congratulations to all our scientists, technicians and engineers who have contributed for this mission. The mission is successfully accomplished, ejecting all the 6 satellites in the perfectly desired orbits. जी हाँ, और मिशन अपने एक और अंतिम प्रयास के लिए आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य था 6 उपग्रहों को कक्षा में भेजना वो पूरा किया जा चुका है. और आप अपने स्क्रीन पर वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, इसरो के चेयरमैन श्री किरण कुमार सर को, विभिन्न केंद्रीय निदेशकों को देख पा रहे होंगे. उसी उत्साह को समेटने के लिए मैं आप सभी को एमसीसी वापस लिए चलता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए. नमस्कार, जय हिंद. Thank you for being with us. From Sriharikota. Our chairman is speaking now. Thank you. And on this 50th launch, we have put a country which is celebrating its 50th year, and we are putting 6 of their satellites into the orbit. And I congratulate the entire ISRO team for the wonderful job they have done. Now I request Kunni Krishnan to say a few words on this occasion. Good evening. PSLV is striding forward in its unbroken march of success and has completed its 31st consecutive successful mission today. As Chairman ISRO indicated, we have established a remarkable milestone, a landmark in the space history of India by completing 50 magnanimous launches from Sriharikota, starting with SLV launch in 1979. It's a rare coincidence that the 50th liftoff from here has culminated into the precise injection of 6 satellites from Singapore when they are celebrating their 50th independence, and also the 50th year of bilateral cooperation between India and Singapore. In every sense, PSLV-C29 is a golden launch. This year, we have completed 17 commercial launches from other countries. That reaffirms ISRO's strong commitment and potential to be a major player in the global space market. We are proud to have got the opportunity to be the host of our partner from Singapore, and I am sure that we have been able to provide them world-class launch service from here. At this juncture, I would like to congratulate the entire team for achieving this major mission. This particular launch, it was a tough one owing to the bad weather, heavy rainfall over this region, and it was the first ever campaign we have taken up in the month of November when the weather vagaries generally set upon here. I must compliment the whole teams from ISRO for taking care of this and have risen to the occasion in overcoming such bad weather conditions and finally meeting the launch campaign. I am sure that the coming missions, in fact, PSLV-C29 is a takeoff
for a sequel of monthly launches from here, starting with 3 missions of IRNSS, 3 remaining missions of navigation satellites to complete the IRNSS constellation. ISRO's success comes from its tradition to take up challenging tasks wholeheartedly and with a lot of commitment, and I am sure that the coming days we all will stand together to meet the challenging demand from ISRO and the nation. Thank you very much. Now we can hear from Jay Kumar, our mission director. Good evening. Really, I feel proud to announce that our PSLV-C29 TeLEOS-1 mission was a grand success, and it is a 100% mission accomplishment. As it was pointed out, it is a 31 continuous success PSLV has demonstrated. And as you know, this time we have used a Corelon configuration vehicle for PSLV-C29 mission, and this is the 11th flight using the Corelon configuration vehicle. Now, I can claim that this is a very prestigious mission for us, being the first satellite, the commercial satellites from Singapore that has been offered to us for a ride in PSLV, and we accomplished the job perfectly. And along with the TeLEOS-1, that is the main satellite, 5 more smaller satellites also have been launched and all have been positioned in the orbit perfectly. And in fact, as you have seen, the vehicle has performed excellently well. All the systems performed well, and the orbit achieved is very precise. It's only 5 kilometers from the specification of 550 kilometer circular orbit, and the inclination is very, very close. In fact, it is 15 degrees exactly on the dot. It has been achieved. And now, in fact, I would say that the selection of the launcher, PSLV launcher by Singapore team for their maiden launch, that shows the confidence that external customers has in PSLV. It's a great thing for us, really. It's a very encouraging thing for us. And now, in fact, PSLV, we are nearing 90 satellites. We are nearing century. Very soon, we will be touching the record of 100 satellites being launched in PSLV. This time, with these 6 satellites, we have touched the 90 satellites. It has been launched by PSLV, and this is the 6th dedicated PSLV missions. In fact, it has been pointed out by SHAR Director SDSC, that there was as you know, this launch campaign, the later part of the launch campaign has been done in a very bad weather conditions, and our teams, in spite of there was a transportation, air traffic, there was a issue, air connectivity was not there to Chennai, and our teams, they took pain and they offered themselves. They are ready to travel via Bangalore to reach so that we can hold the launch rate. This is the type of dedication and the passion that our team ISRO has towards the work. This is the result of that we could hold the launch date that we have earlier declared. And let me take this opportunity to acknowledge and thank each and every one of the team ISRO, the industry counterparts who played a major role in this mission, and the technical review committees and the senior members who have been with us giving guidance and resolving the technical issues on real time. And let me wish good luck to the Singapore friends for the early commissioning of their satellites. Thank you. First of all, let me compliment and congratulate the entire ISRO team for their wonderful job of injecting precisely the Singapore satellites in that orbit. Along with this particular the missions of Singapore satellites, this particular mission have a special gift for the propulsion fraternity. That is, after injecting all the satellites, we are carrying out one major experiment, or very good special experiment, to ignite once again the PS4. This aspect is going to give a major mission flexibility for the vehicle
to plan different orbital missions in a single launch vehicle mission. So once again, I congratulate the people. Also, the way the entire team members struggled to integrate the vehicle, assemble the vehicle in the inclement weather conditions, really, they have sacrificed a lot. Let me once again congratulate and compliment the entire team for doing the wonderful job. Thank you. A very good evening to all. What a splendid journey PSLV had till its 31st mission, and it's going to continue for many more missions to come. At this time, let me congratulate the entire PSLV team spread across ISRO centers of VSSC, LPSD, SDSC, IPRC, IASU, who is making this vehicle for these launches. And congratulations to them, those who participated in this launch, and also those who are spending their time even now preparing for the upcoming launches of PSLV-C31, 32, 33, and 34, currently going on at all the centers of ISRO. And as Mission Director said, it's going to be a monthly launches from now on. And at this moment, let me put on record their great contribution to make this PSLV possible with high level of reliability and precision, which you have been demonstrated today. And I also congratulate the entire team from the Singapore, ST Electronics, for providing us this opportunity to put you safely in orbit. And I wish all the best for them for a successful mission to be accomplished through their satellites. Thank you so much. Respected Chairman ISRO, seniors, my dear colleagues, let me first wish you very great congratulations to all of us in ISRO device colleagues for the great achievement of a perfect launch that we just had. And the orbital accuracy, as was told, is about 4 to 5 kilometers. The inclination is on the dot. It yet again proves the perfectness of all the systems, including the navigation system, that yet again consistently giving the accuracy. And at this point of time, I would assure you, sir, the systems for the next 2-3 missions are already ready and waiting, and we are geared up to this increased launch load. And I know that as per your mandate, all the centers are working 24/7 to meet this increased demand. At this point in time, assuring all the hard work required to meet these mission requirements, enhanced mission requirements. I wish all the colleagues and across the centers all the very best and congratulations, and thank you very much. Good evening. First of all, let me congratulate all my colleagues in ISRO as well as participating industries and other organizations who contributed to this success on this momentous occasion of 50th launch from Sriharikota. A couple of months back, when these launch schedules were being discussed, IPRC Mahendragiri came into focus as the integrators of the PS2, PS4 stages for this launch because of constraints. And during this difficult times, our team was able to put in tremendous effort to produce and deliver the stages on time to effect this launch as scheduled. On this occasion, I once again congratulate, and on behalf of IPRC Mahendragiri, our sincere congratulations and best wishes to the future launches of PSLV. Thank you. Good evening. First of all, let me congratulate the project and the entire ISRO team for the successful launch of PSLV-C29. I would like to acknowledge the contribution of all my colleagues in ISTRAC who have supported this mission and all the missions in the last few years. Their contribution, their dedication has been behind the very successful tracking support that we have provided to each one of these launches. And I am sure we will continue
to provide such support to PSLV and GSLV projects. Let me once again wish the project that they have complete success in all their future endeavors, and thank Chairman ISRO for this opportunity to thank everyone in ISRO for the excellent cooperation that they have given to ISTRAC, and special thanks to range team for working with us in making sure that the tracking support has always been an excellent one for the missions. Thank you. May I now request our friend from Singapore to say a few words on this occasion. Hi, good evening, everybody. I want to first of all thank the chairman of ISRO and the entire crew from the ISRO, Antrix and the PSLV crew for making this possible. This is, of course, a very meaningful launch for us, being the 50th year of independence for Singapore, and also the 50th years of relationship between Singapore and India. So we are very happy and delighted with this success. It's given us opportunity to test many technologies in satellite for us. As you can see, the participants in this particular launch, they come from our industry, our academia, some of our research institutes. It's a great opportunity for us to test many of the technology linked to space to enable us to reap benefits from space for future. So once again, a very big thank you to all of you for all the effort put in, without which this would not have been possible. And of course, big thank you also for the Singapore team for making this possible. Thank you very much. Now with this launch in this year of 2015, so we have completed a major set of activities, and now we are looking forward to 2016, where we intend to carry on this activity of meeting the requirements of putting our satellites, both communication, navigation, and Earth observation, into orbit with greater rigor. And I take this opportunity to place on record my sincere thanks to all the ISRO fraternity for the wonderful job they are doing, and also which they will continue to do next year, because we have a lot more to achieve in the coming year. Thank you.